Hello, everybody. Welcome you all to the Sampan Academy. This is Sambit, and we are now starting one of the very interesting topic, that is science and tech. And from the science and tech, in today's class, we are going to start one of the very important topic, that is the space technology. Space technology प्रतिवर्ष OPSC, UPSC जे कौन सी स्टेट लेवल एग्जाम बा नेशनल लेवल एग्जाम हो कि we can expect 2 to 3 क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर. तो आम ए चैप्टर को भल से डिटेल बुझा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करबा एंड ता सहित आजर क्लास रे वेरी बेसिक रु आमे धीरे धीरे डिटेल्स को जिबा. तो डेरी न करी आमे स्टार्ट करबा. बहुत बढ़िया चैप्टर, भल से अटेंशन सहित यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू लिसन द क्लास. So let's start the class. Space technology in India deeply linked with ICT. ICT ର ମାନେ ହେଉଛି information and communication technology and defense, supporting communication, surveillance, disaster management and national development. This is the very core subjective definition of space technology. But I am here to decode everything. आमे जानिले एटा गोटे स्पेस टेक्नोलॉजी गोटे वेरी सब्जेक्टिव डेफिनेशन, बट आमे ता गोटे वेरी जनरल परसेप्शन बा सिंपलिस्टिक अप्रोच रे बुझिबा को चेष्टा करिबा. तो स्पेस टेक्नोलॉजी जेतले आमे कथा आसु संगे संगे हम मनुका से महाकाश रे कोन सब घटुची, आइंस्टाइन का थ्योरी हो जहां भी सब ट्रेंडिंग रे आसे, से रॉकेट मिसाइल जहां भी आसे, आमे संगे संगे ए कथा सब हम माइंड को आसे. तो सिमिलरली आमे जदे देखिबा, जस्ट अ मिनिट, लेट मी the pen. Yeah, the space technology already have written here, but let me I'm trying to explain you in a very simplistic approach. जेतला में स्पेस टेक्नोलॉजी कथा एनालिसिस करंती सेतबेले दीटा परसेप्शन आसे. गोटे होची आईसीटी एंड अनदर वन होची गोटे डिफेंस. ता अर्थ होची the space technology by space research. I'm writing here so that notes बनाबारे इजी हबो. स्पेस टेक्नोलॉजी बा रिसर्च जो इंडिया चली इज कनेक्टेड कहा सहित ना आईसीटी एंड डिफेंस. तो इंडिया रो स्पेस टेक्नोलॉजी दीटा जिनिस सहित कनेक्टेड ही अछि. गोटे होची आईसीटी एंड अनदर वन इज डिफेंस. आईसीटी रो फुल फॉर्म होची इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस. यू ऑल नो हमर प्रतिरक्षा क्षेत्र रे किपरि भाबरे हमर स्पेस टेक्नोलॉजी हमको हेल्प करूची. तो से विषय में आलोचना करबा. तो हमें गोटे जनरल आइडिया रखिले जे हमर स्पेस टेक्नोलॉजी दीटा कांसेप्ट रे चलीची. गोटे होची आईसीटी थ्रू रे केमते हमें निजुको हाउ वी कैन गेट मोर एंड मोर आइडिया अबाउट द स्पेस एंड से डेली लाइफ रे हमको किपरि हेल्प करि परिबा. एंड एट द सेम टाइम विथ द हेल्प ऑफ स्पेस and defense, how can we manage our borders and disaster management. This is the very core concept of space technology in perception to India. I'm not saying about other countries, various technology are there, but right now we are dealing with the ICT and defense technology of our country. So let's begin. So when we talk about space technology, ଯେତେବେଳେ ଆମେ स्पेस टेक्नोलॉजी कथा आलोचना करू संगे संगे मनुका से सेंडिंग सैटेलाइट्स, सेंडिंग रॉकेट्स, अदर मशीन्स इनटू स्पेस तो हेल्प कहीं कम्युनिकेशन. आज आम जो मोबाइल कथा होचु, टीवी देखुचु, जहां भी करूचु with the help of information and communication technology, that is ICT, and at the same time it helps us in protecting our border. मैप्स करूची, डिजास्टर मैनेजमेंट करूची, फार्मिंग रे हेल्प करूची. वेरियस टेक्नोलॉजी we are using under space technology with the help of ICT in align with the defense technology. तो आमे जदि एठी मु गोटे क्वेश्चन करिबी, why we are sending rockets anything to space, हमें काहे की से रॉकेट को हो जतले when we talk about space technology संगे संगे हम मनु को से that we are sending
rockets missile to the space. But my question is why we are sending this? हमें काहे की रॉकेट गुड़ का स्पेस को भेजु? The very simple answer is हमको स्पेस को पठेबार मेन पर्पज होउची टू एक्सप्लोर द स्पेस. स्पेस को एक्सप्लोर करया पई बा स्पेस विषय जानिया पई हमें एही रॉकेट को बा मिसाइल को बा एनीथिंग पठौछु. तो द मेन पर्पज जदि हम देखिबा मेन जदि हमें गोटे कोर पर्पज बा गोटे ऑब्जेक्ट देखिबा काहे कि हमें पठौचंदी तो संगे संगे गोटे पॉइंट पाइले जे टू एक्सप्लोर द स्पेस. स्पेस को एक्सप्लोर करया पई टू नो more about space we are sending any spacecraft or anything. हमको स्पेस विषय रे एक्सप्लोरेशन करिया पई सेथि लगी हमें स्पेस को ए सब जिंस पठेई थाउ. तो हमें जो जानिले आईसीटी किपरि हमको हेल्प करूची इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जोटा हम कहिली आईसीटी थ्रो रे हमें कोन करि पाउछंती ना हमें डीटीएस सर्विस पाउछंती आउ कोन करि पाउछंती ना वी आर गेटिंग मोबाइल आउ कोन हमें हेल्थ इस केस रे मध्ये यूज करछंती आउ कोन करि पाउछंती ना हमें हमर वेरियस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी जोटा हमें कहि परिबा से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जहां भी हो with the help of IC थ्रो हम करछंती. जदि हमें डिफेंस कथा को आसीबा डिफेंस थ्रो रे हमें कोन करूछंती ना डिफेंस थ्रो हमें करछंती कोन ना बॉर्डरिंग आवर कंट्री हम कंट्री को हमें बॉर्डरिंग रे हेल्प करछंती. सेकंड कोन हमें डिफेंस भी डिजास्टर मैनेजमेंट को हमें जानि परछंती कोउटी किछि जदि किछि सेमती एग्रीकल्चर रिलेटेड भी होछि सेटा बहुत आईसीटी थ्रो रे ही परिबो एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी यूज करछि से थ्रो रे भी हमें जानि परछंती कोउटी कोन प्रॉब्लम आसीबो. सो दीज आर द वेरी बेसिक कांसेप्ट. हमें स्टार्टिंग रू जानिबा जे इंडिया स्पेस टेक्नोलॉजी बा स्पेस रिसर्च is connected with two, that is one is ICT and another is the defense technology, and with the help of ICT we are getting many service, that is the DTS, that is mobile, health and many others, and with the help of defense we are bordering our country, we are helping our citizen to know more about the disaster management, we are helping our farmers to know about the condition, we are helping our farmers to know about the monsoon, kebe monsoon asibo kon hobo weather pattern kon rebo, various things we are getting from the space technology जेतेबेले हमें आईसीटी धरुचंती बा डिफेंस. दिस इज द वेरी बेसिक कांसेप्ट. हमें जे पर्यंत गोटे बेसिक आईडिया न नेचंती इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड टू मग ऑफ ऑल दिस थिंग्स. हमें खाली प्रति मुहूर्त जेतेबेले साइंस टे क्वेश्चन आसीबो साधारण गोटे क्वेश्चन आसीबो ना करंट अफेयर्स, बट एटा कोन करंट अफेयर्स नहीं, दिस इज द वेरी बेसिक स्टैटिक नॉलेज. हमें गोटे कोर नॉलेज जानिले हमें देन हमें कहि परिबा ना एटा होउची एटा करंट अफेयर्स की कोन. बट साइंस टेक रे जेतेबेले क्वेश्चन आसे पिलांगर गोटे कांसेप्ट ना करंट अफेयर्स आछि, बट वी शुड नो अबाउट द वेरी कोर एंड बेसिक छोटो छोटो जिंस को हमको मन रखिबा खबा बुझिबा को पड़िबो कोन तार अर्थ. से गोटे छोटो क्वेश्चंस म कहि दोछि मे बी आसी पारे, बट इजी क्वेश्चन गोटे आईडिया थाउ डुअल टेक्नोलॉजी अर्थ कोन. जदि केते न्यूज़ पेपर रे पढला करंट अफेयर्स बा एनीथिंग गोटे टर्म आसीबो जे व्हाट इज डुअल टेक्नोलॉजी. डुअल टेक्नोलॉजी तो तार माने होची जते बारे हमें स्पेस टेक्नोलॉजी सहित अन्य किछि भी से डिफेंस हो से आईसीटी हो एनीथिंग एक्सेट्रा एनीथिंग पढंती एटा को हमें कहू कोन डुअल टेक्नोलॉजी. ताले हमें जानिले जते बारे हमें स्पेस टेक्नोलॉजी सहित एनीथिंग स्पेस टेक्नोलॉजी सहित एनी किछि भी जदी पढिले सेटा को हमें कहबा डुअल टेक्नोलॉजी. मे बी न्यूज़ पेपर बहुत सारा टर्म आसे कि with the help of dual technology, with the help of this, the country has done these things, the country has sent these things. तो dual technology अर्थ होची जे स्पेस सहित अन्य किछि अटैच सहित अन्य बेसी गोटे कोर कांसेप्ट गोटे पर्टिकुलरली किछि मिशन बा किछि पर्टिकुलरली किछि गोटे अलग टेक्नोलॉजी सेतले हमें को डुअल टेक्नोलॉजी रो अर्थ बोली कहि थाउ. तो आज हमें बेसिक कांसेप्ट जानिबा इज स्पेस टेक्नोलॉजी. वी शुड बी dealing with a very important term of space technology because आगु को बढ़ेले बहुत सारा टर्म्स आसीबो जोडा कि ई बेसिक टर्म न जानले हमको डिफिकल्ट हबो. तो आज क्लास रे हमें जो बेसिक टर्म गुडा आलोचना करिबा
जो स्पेस टेक्नोलॉजी अंडर सब टर्म आसे टर्म रो माने कोन एंड से गुडी को सब बुझी गले हमको सुविधा हो आमे आगो क्लास रे ताको रिलेट करि परिबा किबा जतल न्यूज़ पेपर पढुचंदी टर्म आसुची वी कैन रिलेट टू द इश्यूज जहां भी सब अछि तो मैं टर्म लिखुची ताको प्लीज राइट डाउन इन योर कॉपी तो फास्ट मु लिखुचे ठी फास्ट लिखुची गोटे सबोड आमे न्यूज़ देखंती दे सैटेलाइट विषय रे गोटे आमे सबले देखंती सेकंड मु लिखिबी गोटे स्पेस क्राफ्ट थर्ड लिखिबी लॉन्च व्हीकल फोर्थ आसीबो रॉकेट फिफ्थ लिखिबी मिसाइल सिक्स लिखिबी शटल आई विल प्रोवाइड द पीडीएफ तो फास्ट में जानिबा जे स्पेस क्राफ्ट माने कोन स्पेस क्राफ्ट होची बहुत गोटे में कौन सी टेक्निकल डेफिनेशन जीवानी बहुत जनरलिस्टिक पॉइंट रु बुझिबा स्पेस क्राफ्ट अर्थ होची एनीथिंग वी आर सेंडिंग टू द स्पेस इज नोन एज स्पेस क्राफ्ट किछि भी जिनिस आमे जते बेले स्पेस को पठाउचंती ताको हमें स्पेस क्राफ्ट कहि परिबा ता अर्थ मु से गोटे रॉकेट छाड़े गोटे सैटेलाइट छाड़े जहां भी मु जते बेले गोटे पठाउची ताको स्पेस को हमें स्पेस क्राफ्ट रो डेफिनेशन रे हमें कहि परिबा एबे गोटे क्वेश्चन आसीबो ते स्पेस एक्चुअली कोन हमें जानिले जहां हमें स्पेस को पठाउचन ताको हमें स्पेस क्राफ्ट कहबा बट स्पेस रो डेफिनेशन रे कोन स्पेस रो डेफिनेशन होची जते बेले आमे कोन जिनिस छाडुचंती ता अर्थ जते यार्थ रो सरफेस जदी एटा यार्थ सरफेस इमेजिनरी यार्थ सरफेस 100 किलोमीटर परे बियॉन्ड 100 किलोमीटर एठी गोटे लाइन अछि बा मेजरमेंट लाइन अछि या हमें कर्मन लाइन बोली कहू आई एम डूइंग इट इन अ वेरी न्यू पेज यस आमे जानिले जहां भी हमें स्पेस को पठाउचु ताको हमें स्पेस क्राफ्ट बोली कहूचु बट एठी हमें जानिबा से स्पेस टी कोन स्पेस रो अर्थ होची जदी एटा हला यार्ड सरफेस एटा हला 100 किलोमीटर एठी गोटे लाइन अछि जोटा कोनती कर्मन लाइन बोली कहा जाय कर्मन लाइन कहा जाय तो जते बेले किछि भी जिनिस एई 100 किलोमीटर को एई 100 किलोमीटर क्रॉस करके एई जगह को आसे सेई जगहटा को हमें स्पेस बोली कहिबा तो एनीथिंग if it goes beyond 100 kilometer and when the parameter is Karman line जते बेले पे अटेंशन प्लीज जते बेले किछि भी जिनिस हमें जो कहले स्पेस क्राफ्ट सेते बेले हमें गोटे जिनिस को स्पेस क्राफ्ट कहिबा जते बेले सेटा यार्ड सरफेस टारू 100 किलोमीटर क्रॉस करके कर्मल लाइन जो पैरामीटर अछि से कर्मल लाइन पैरामीटर को क्रॉस करके गोटे जगह रे पहुंचीबो सेई जगहटा को हमें स्पेस बोली कहिबा तार्थ जदी 100 किलोमीटर भितरे गोटे जिनिस अछि तो डू यू थिंक कैन वी से इट एज ए स्पेसक्राफ्ट नो तो टू मेक एनीथिंग एज ए स्पेसक्राफ्ट टू डिफाइन एनीथिंग एज ए स्पेसक्राफ्ट we can assure that that thing is going beyond 100 किलोमीटर बा कर्मल लाइन को क्रॉस करके जहां भी जीवो ताको हमें कहि परिबा ना एटा गोटे स्पेस क्राफ्ट तो हमें जानिले जहां भी जाउची स्पेस को सेटा हला स्पेस क्राफ्ट एंड स्पेस डेफिनेशन होची 100 किलोमीटर यार्ड सरफेस टारू कर्मल लाइन जो पैरामीटर अछि ताको क्रॉस करके जहां भी जीवो से जगह को हमें कहबा स्पेस तो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट तो एबे आसीबा ए जो हमें जानिले शटल आउ सैटेलाइट डेफिनेशन टी कोन शटल एंड सैटेलाइट तो शटल डेफिनेशन जानिया पूर्व हमें सैटेलाइट डेफिनेशन विषय टिके आलोचना करिबा तो ए शटल आउ सैटेलाइट जदि मु क्वेश्चन करबी गोटे क्वेश्चन आसीबा शटल एंड सैटेलाइट कोन तो शटल एंड सैटेलाइट कहि परिबा बोथ आर स्पेसक्राफ्ट बिकॉज़ हमें प्रीवियस स्लाइड देखिले स्पेसक्राफ्ट डेफिनेशन कोन
जहाँ भी स्पेस को जाउची एनीथिंग इज गोइंग टू द स्पेस इज नोन एज स्पेसक्राफ्ट तो शटल हो कि से सैटेलाइट हो सब किछि स्पेस को जाउची तो आमे एटी गोटे कांसेप्ट क्लियर हेले शटल हो कि सैटेलाइट हो बोथ आर पार्ट बोथ आर स्पेसक्राफ्ट वन क्वेश्चन इज क्लियर एंड सैटेलाइट कथा एतल देखिबा सैटेलाइट इज ऑलवेज डिफाइंड इन द रेस्पेक्ट ऑफ ऑर्बिट सुनिथिबो यार थ्रो ऑर्बिट अछि ए जो सैटेलाइट कथा में कहउचंती यार थ्रो विभिन्न प्रकार ऑर्बिट सब अछि so satellite is always defined with the perception of orbit तो ए अर्थ रो ऑर्बिट थ्रो रे आमे सैटेलाइट रो डेफिनेशन को निर्धारण करू तो फास्ट हमें जानिले जे सैटेलाइट आउ शटल होची बोथ आर स्पेसक्राफ्ट एंड सैटेलाइट टी जो परसेप्शन बा तार डेफिनेशन always should be decided by the orbit of the earth and we know that earth is having some orbit ଏବେ क्वेश्चन आसीबो व्हाट इज ऑर्बिट तो ऑलरेडी वी आर गेटिंग ए पॉइंट दैट जे सैटेलाइट हम जो कहउचंती सेटा इट विल बी डिसाइडेड बाय द पोजीशन जो अर्थ रो ऑर्बिट अछि से ऑर्बिट रो पोजीशन अनुसार हमें सैटेलाइट रो पोजीशन को डिसाइड करिबा तो एंड आउट कांसेप्ट जानिले जे ऑर्बिट होची विथ द परसेप्शन ऑफ अर्थ दैट इज द हाउ मच ऑफ अट्रैक्शन द अर्थ इज डूइंग टू एनीथिंग तो एई परसेप्शन रे हमें गोटे जनरलिस्टिक पॉइंट देखिबा जे ऑर्बिट होची ना कहा सहित हमें कंपेयर करि परिबा ना हमें ताको गोटे अट्रैक्शन सहित कंपेयर करि परिबा then what is attraction एबे जे देखबा then attraction टा कोन attraction with reference to the earth is known as gravity ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସैटेलाइट टी गोटे पर्टिकुलर ऑर्बिट रे सेटा बुलिबो एंड ऑर्बिट हु ऑर्बिट रे बुलिबो दैट विल बी डिसाइडेड upon the attraction of that orbit and attraction is nothing but the gravity of the earth तो हमें कहि परिबा जे सैटेलाइट्स कैन बी स्टडीड with the gravity effect सैटेलाइट को आमे अर्थ रो जो ग्रेविटी अछि से ग्रेविटी रो इफेक्ट अनुसार स्टडी करी परिबा वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द शटल विषय रे हमें नेक्स्ट स्लाइड जानिबा नाउ वी आर ओनली फोकसिंग ऑन द सैटेलाइट तो ये जो ऑर्बिट कथा कहली अर्थ रो दी प्रकार ऑर्बिट अछि गोटे ऑर्बिट जो ऑर्बिट कथा हम कहली अर्थ दी प्रकार ऑर्बिट अछि गोटे होची इन गोटे होची जस्ट अ मिनिट गोटे होची यस the earth is having two types of orbit one is the inner orbit and another one is the outer orbit तो अर्थ रो दी प्रकार ऑर्बिट अछि अगेन आई एम रिपीटिंग अर्थ रो सैटेलाइट घुरुची ता ऑर्बिट पर डिपेंड करे को ऑर्बिट रहउची एंड से ऑर्बिट ता डिपेंड करे कहा पर ना अर्थ रो ग्रेविटेशन ऊपर एंड अर्थ रो ग्रेविटेशन को अट्रैक्शन मध्ये अछि एंड ये ऑर्बिट दी प्रकार गोटे होची इनर ऑर्बिट आउट होची आउटर ऑर्बिट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट होची हम केमते जानिबा जे कोउटा इनर कोउटा आउटर हमें जानिले अर्थ रो गोटे ग्रेविटी अछि से ग्रेविटी गोटे अट्रैक्शन अछि एंड ये जो ऑर्बिट कथा पडुची दी प्रकार ऑर्बिट गोटे इनर ऑर्बिट आ गोटे आउटर ऑर्बिट जते बेले टिल द डिस्टेंस जते बेले जाए अर्थ रो ग्रेविटी रो अट्रैक्शन थाए ताको हम इनर ऑर्बिट कहबा तार्थ जो अर्थ रो ग्रेविटी रहउची से ग्रेविटी रो अट्रैक्शन जते डिस्टेंस थाए एप्लीकेबल हबो ताको हम कहबा इनर ऑर्बिट तार्थ जो सैटेलाइट अर्थ रो अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटी द्वारा परिचालित होची बा कंट्रोल होची तो वी कैन से दैट सैटेलाइट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द इनर ऑर्बिट ऑफ अर्थ एंड जो पोजीशन थारु बा जो पैरामीटर थारु अर्थ रो जो ग्रेविटी अछि तार अट्रैक्शन नॉलिफाई बा नेग्लिजिबल हो जाउची सेते बेले जो सैटेलाइट चालुची ताको हम कहबा द सैटेलाइट इज नॉट बीइंग कंट्रोल्ड with the by the जो orbit
बा जो अर्थ रो ग्रेविटी रहउची तार इंपैक्ट से सैटेलाइट पे पडुनी तमे जानिले जो दी प्रकार ऑर्बिट अछि गोटे इनर आउटर साधा भाषा में कहि परिबा जेते बड़ जाई ग्रेविटी रहउची ताको हमें कहिबा इनर ऑर्बिट जोटी ग्रेविटी रो आ अट्रैक्शन काम करूनी ताको हमें कहिबा सेटा आउटर ऑर्बिट रे जाउची तो सैटेलाइट कैन बी मूव बोथ इन इनर ऑर्बिट एंड आउटर ऑर्बिट सर डिपेंड करिवो हमें को पर्पज ताको सेंड करूछंती तो आमे जो थी इनर एंड आउटर ऑर्बिट विषय बुझिले जब आमे मोर डिटेल को जिबा मैथमेटिकल सिनेरियो देखिबा 36,000 किलोमीटर जाए 36,000 किलोमीटर जाए अर्थ रो इनर ऑर्बिट कहा जाय बा ता इन्फ्लुएंस अछि एंड बियॉन्ड 36 के आउटर ऑर्बिट स्टार्ट हुए तो अर्थ is having two kind of orbit one is inner orbit another one is outer orbit inner orbit is applicable up to 36,000 kilometer and outer orbit beyond 36,000 kilometer is known as the outer orbit of earth सैटेलाइट माने आमे जो आलोचना करथले विभिन्न ऑर्बिट रे रहंती आमे जेतेबेले आमे जानिले ता अर्थ जेतेबेले अर्थ रो ग्रेविटी रो अट्रैक्शन जेतेबेले जाई रहूची सेटा होची इनर ऑर्बिट ता अर्थ हम जदी क्वेश्चन करबी जेतेबेले आमे गोटे सैटेलाइट को पठाउचंती जदी सेटा इनर ऑर्बिट रे थिबो सो दैट से सैटेलाइट टी अर्थ विषय ही स्टडी करिवो काहे के ना अर्थ रो ग्रेविटी जोकु से सेटी अछि सो से सैटेलाइट टी आमे कहि परिबा ना अर्थ पाई ही पठा जाईची इट इज ओनली एप्लीकेबल आमे जेटा कहिथिले हमर आईसीटी बा डिफेंस से डिफेंस हो आईसीटी हो फार्मिंग हो एग्रीकल्चर हो हेल्थ पाई हो डिजास्टर मैनेजमेंट जहां भी अछि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर इन द इनर ऑर्बिट ऑफ द अर्थ तार्थ हम जे क्वेश्चन पडिबा एग्रीकल्चर सैटेलाइट को उठी जाउची कि हमर आईसीटी हो डिफेंस रिलेटेड ना काहे कि ना अर्थ को से जगह पे जाउची भाई अर्थ विषय इंफॉर्मेशन दबे जाउची सो दैट हम आखि बुझी कहि परिबा जे सेटा 36,000 किलोमीटर भीतर अछि बा इनर ऑर्बिट रे अछि जते बड़े when we do plan to study about beyond earth हमें जतले अर्थ रो बाहरे विषय स्टडी करे में चाहू सेते बेले हमें जो सैटेलाइट को पठाऊ ताकू हमें आउटर ऑर्बिट रे रखू सो दैट जते बेले हमें जो मिशन अछि मार्स मिशन सन मिशन जो सब मिशन अछि से गुड को अर्थ में एप्लीकेबल नुह तार जदि क्वेश्चन पडिबो मार्स मिशन पे जो सैटेलाइट जाइतिला सेटा कोठी थिला वी कैन से इट इज इन द आउटर ऑर्बिट ऑफ द अर्थ बिकॉज़ अर्थ विषय नुह अर्थ रो बियॉन्ड बा 36,000 बियॉन्ड जहा विषय बुझा पे जाउची सो दैट हमें कहि परिबा सेटा बियॉन्ड अर्थ रो विषय बुझा पे जाउची दैट इज आउटर ऑर्बिट रे अछि आउ किछ हमें सैटेलाइट विषय जानिबा ए जो सैटेलाइट हमें पठाउचंदी दे आर नॉट रीयूजेबल ए सैटेलाइट गुडी को आमे आउ रीयूज करि परिबा नाही ता अर्थ कोन जे कोन सैटेलाइट पठाउचंदी से केबे आउ आसीबो नाही गोटे भलो आइडिया कांसेप्ट होची जहां भी सब सैटेलाइट जाईची से गुडी को बैक करि केबे पृथ्वी पृष्ठ को आसी नाही सेथे लागि सैटेलाइट सर नॉट यूजफुल ताको हमें रीयूज करि परिबा नाही तो एठी गोटे क्वेश्चन मु पचारि परिबी सैटेलाइट मनुष्य जाई परिबे की नो काहे की ना जेहेतु सैटेलाइट गुडी को बैक करके पृथ्वी पृष्ठ को आसीबो नाही तो आमे गोटे माने कंक्लूजन रे पहुंची परिबा जे सैटेलाइट ले बा कोनसी ह्यूमन जाई परिबे नाही बिकॉज़ ह्यूमन लाइफ इज वेरी प्रेशियस टू अस हाउ कोन जानिबा वी डू नॉट सेंड एस्ट्रोनॉट जोटा हम कहली ह्यूमन अर्थ हम एस्ट्रोनॉट मान को सैटेलाइट रे पठाऊ नाही सैटेलाइट गुडी को ओनली लिमिटेड फॉर टू गिविंग नॉलेज जदी इनर ऑर्बिट थिबो अर्थ विषय आउटर ऑर्बिट थिले अर्थ रे बाहर मिशन गुडी का पई हमको ये करे गोटे फैक्चुअल क्वेश्चन कहूची भारत रो फर्स्ट सैटेलाइट केबे बा कोटा थिला भारत रो फर्स्ट सैटेलाइट होची 1975 आर्यभट्ट जोटे कि 19 अप्रैल ले सेंड करा जाई थिला तो हाई हो यू ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट एंड बोथ कांसेप्ट क्लियर इज ऑर्बिट इनर और आउटर एंड सैटेलाइट विषय यू ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट तो एही परे जो सब देश माने निज निजर सुविधा पाई बा निज देशर डेवलपमेंट पाई बहुत सारा सैटेलाइट को स्पेस को पठाउचंती तो सेठी लगी आमे एक टर्म कहि परिबा इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन अछि सेठी सैटेलाइट गुडी को बहु मात्रा जिबारो
गोटे स्पेस जंक हो जाए तो जदि के स्पेस जंक पड़ो स्पेस जंक इज नथिंग बट द assimilation of various satellites from various countries बहुत सारा देशर जो सैटेलाइट गुड़िक स्पेस स्टेशन को जाऊँगी से गुड़िक जेहतु बैक करके आसुना सब सीट एकत्रित रोचे नोन एज स्पेस जंक आ गोटे वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मे बी को पब्लिक सर्विस कमिशन रे आसीपारे गोटे स्वतंत्र यही सब स्पेस जंक एते मात्रा बढ़ीगला गोटे सिंड्रोम देखा देलानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रे जे बहुत सारा ये सैटेलाइट रोचे स्पेस जंक कहते ऑलरेडी वी नो दैट गोटे स्पेस जंक गुड़िक गोटे सिंड्रोम रे कन्वर्ट हेलानी से सिंड्रोम रे ना होची केस्लर सिंड्रोम आई होप ए केस्लर सिंड्रोम क्वेश्चन टी अपकमिंग को भी एग्जाम रे आसु स्पेस जंक एंड केस्लर सिंड्रोम assimilation of all the satellites from various countries is known as space junk and the syndrome which is associated with space junk is known as Kessler syndrome. So I hope you all are getting my point and you have understood the very basic concept of the space technology. In the next class, we'll discuss about the shuttle and other terms. Thank you. Bye bye. Take care.